Hello everyone, this is Ahmed Shafiq. So today we're going to solve another LeetCode problem, which is the most popular problem and you will find in most of your interviews. This problem is just like finding the three-digit even number. You have to find three-digit even number from an array. For example, let's take an example. We have an array of numbers and just we need to find this 2, 8, 3, 7, 2, 3, 2, and so on. This is an array and we have to find the three-digit even number. Now let's check the three-digit even number, maybe just like a simple one. Auto draw, and we need to set the pointer. Just wait a while. Um, just wait. This one. For example, but in our case, they will give us an array just like this: 2, comma 2, comma 8, comma 8. This is an array and we have to find the three-digit even number. और ये कैसे होगा? It's a very simple thing. जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल हमें x x ये कोई भी नंबर है और इसके साथ हमें इवन नंबर जोड़ना है. इवन नंबर मे बी 2, 0, 4, 6, 8. But in this case 0 is not allowed. तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो लास्ट नंबर हो सकता है वो इवन हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इशू वाली बात तो कोई नहीं. तो हम ऐसे भी बना सकते हैं 2 2 8. दिस इज अवर फर्स्ट सिनेरियो and then we can make 288. This is another one and we can say 282 or 822 so and so on. इस तरह करके हमारे पास काफ़ी सारे केसेस बनते जाएंगे. नाउ अब हम इसे करेंगे कैसे, या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो इट्स अ गुड थिंग, बट आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम गोइंग, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको. ठीक है, तो वो सब आपको समझ आ चुका होगा. तो अब हम इसे कैसे करेंगे कैसे. एक्चुअली हमें तो एक एरे दी होगी इसने, जस्ट लाइक 2 8 2, 8. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें तो ऑब्वियसली एक लूप चलानी है जो कि इसकी लेंथ के मुताबिक हो. जस्ट लाइक हमने आई से एक लूप चला ली टूवर्ड्स द लेंथ ऑफ द दैट एरे. उस एरे की लेंथ तक हमने एक लूप चला ली. अब हमने क्या किया, जो भी हमारे पास ith पे वैल्यूज होती थी स्टोर, उसको हमने क्या किया, एक 3 डिफरेंट वर्ड्स में स्टोर कर लिया. जस्ट लाइक यू नो अबाउट द थाउजेंड्स, hundreds, and sorry, not in this case. Yes, we have a hundreds, we have a tens, and we have a units. All right, so according to this we are going to store in these variables, or you can choose ABC or any other variables. After storing this, the first case scenario we are going to check that just like an age with a 100 value, or you can say comparatively the age a value, a should not be, or you can say must not be 0, is equals to 0, which means the value stored inside this, inside these variables a or h, you can compare age with hundreds, for as a digit, it must not be 0. Also जो आप कह सकते हैं एक और कंडीशन है कि C को जब हम उसका मोड लें 2 के साथ, it must be equals to 0, which means we are going to say it must be an even number. Alright, so this is what we are going to say. Now after that, when these conditions are true, and then we are going to add it to the number, we can say if all these conditions true,
A must not be equals to 0, and C divisible, you can say we can take the remainder of 2 which must be equals to 0, or if C is an even number or a unit should be an even or must be even, then we can add them into the even number. We can say even 3-digit even, we can add A plus B plus C. But when we are going to adding this format, they will return us 282. We can got 12. How we can fix this, man? This is an easy trick. You can use it. We can multiply A with an hundreds plus B with a 10, and then we can add just C. We will got 282. Wow, we solved this problem. Now it's time to code this solution. मुझे होप है कि आप लोग को समझ आ चुकी होगा जो मैंने बताया कि हमें एट द एंड जो है वो 3-digit इवन नंबर मिल जाता है. तो अब हम इसको कोड VS कोड की तरफ चलते हैं और देन हम वहाँ जाके उसे कोड करते हैं. Now in this case we are going to delete all of the stuff. We are going to from typing import list, and from iter tools import permutations. We are going to create a digit underscore number function, 3-digit number function. We're going to assign the digits should be list, and it should be int type, and we can refer it to the list int. Right, now what we have to do is to create a set result with initialize with the set for perm to perm in permutations. All right, now what we are going to do is here is to create a digits, and starting from the digits to 3. Why we are going through this approach? As our previous approach, uh, we forgot to deal with the largest number of arrays. Just like we just consider a 3 array, number of 3 elements in an array. बट जिस तरह अगर कोई एलिमेंट्स 4 एरे की हो जाती है, 7 एरे की हो जाती है, तो वो तो 3 से आगे जाएगा तो हर 3 को वहाँ स्टोर करवाता जाएगा. इट्स नॉट अ गुड अप्रोच. We have to check the permutations. In this case, these are optional libraries we can import in it, but or not. It's totally optional. Python 3.11 automatically supports this. If perm zeroth element is equals to 0, then we can say continue. Alright, अभी हमने स्टेटमेंट ये दिया है कि हमारा अगर फर्स्ट उसको 0 हो जाता है, then we can break this scenario and we can move to the another scenario. अगर तो हमारा फर्स्ट जो है नो लीडिंग 0, ये हमारा केस सिनेरियो ऐसा है कि कोई भी लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. नाउ इफ सॉरी, तो कंटिन्यू विच मीन्स हमें यहाँ से नेक्स्ट पे शिफ्ट होना चाहिए था. नाउ वी हैव अ नंबर विच शुड बी इक्वल्स टू दी परम 0, यानी कि 0th नंबर को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस परम फर्स्ट को हमने जो है वो किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, प्लस परम जो है हमारे पास सेकंड होगा उसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है. इफ नम मस्ट बी, यानी कि अगर हम इसका रिमाइंडर ले लें, मोड ले लें, equals to 0, then we can say result result dot happen with, sorry, it's a set, and how to add with the num. All right, I'm going to return result, result. This is what we have to do, and just हमने इसे पास कर दिया, and now we're going to Python 3digit.py. या अब हमें इसने एक सेट दे दिया. सेट के अंदर जो होते हैं आपको पता है कि वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत बिखरे होते हैं, सॉर्टेड नहीं होते. तो अब इसको सॉर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सॉर्टेड फंक्शन, एंड वी कैन पुट द रिजल्ट इनसाइड देयर.
and then when you again click it, it will give you a sorted list: 102, 120, 130, 132, 210, 230, 302, 310, 312 and 320. अच्छा, अभी इसमें एक बात ये थी कि ये जितना दिखने में आसान काम लग रहा था उतना था नहीं। एक्चुअली इसके अंदर परम्यूटेशंस थी। परम्यूटेशंस, ठीक है, परम्यूटेशंस थी। आपको परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, परम्यूटेशंस होती क्या है, ठीक है। परम्यूटेशंस के कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। ये लीड कोड की प्रॉब्लम थी, सॉरी मैं भूल गया था उसके अंदर परम्यूटेशंस के बारे में कि क्या था परम्यूटेशंस, यानी कि परम्यूटेशंस उस प्रॉब्लम के अंदर थी या नहीं, तो जस्ट मैंने नोट डाउन की थी। ऑलराइट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव अ डिजिट्स, दिस दीज आर द डिजिट्स, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर, नंबर, और इसमें हमने डिजिट्स पास कर दी हैं, दीज आर द डिजिट्स स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल, and then it is converting them into the list, into list, yeah, we they are into list, and the digits inside this list must be the int. We can do this by just not importing this, we can skip from this part to this. All right, uh, all right, we have to assign some permutations right now here, yeah. राइट, सो हम इस चीज़ को ना यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, हम इसको एक एरे दे देते हैं जो कि हमारे सबके लिए आसान हो जाएगी कि एरे दे देते हैं, बट सॉरी सॉरी, अगर हम इसको डिजिट्स के नेम की एरे दे देते हैं तो उससे हमारे लर्निंग आसान हो जाएगी। अब ये हुआ कि हमने इसको प्रिंट करवा दिया नंबर, तो हमने इसको दे दिया नंबर। अगर हम यहाँ एरे बना दें और उसको हम ये पास कर दें ये चीज़ें, ऑलराइट, ठीक है, ये हमारी इंट एरे है, ठीक है, इंट एरे, अब देखें पास हो गई है। अब जैसा मैंने इसको एरे पास कर दिया, सिंपल, व्हेन यू गोइंग टू रन दिस इट विल गिव यू सेम थिंग, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक हमने थोड़ा सा इसको पुराने मेथड के थ्रू किया कि हम उसको लिस्ट टाइप अगर डिजिट्स देते हैं तो वो इस तरह कर ले, लेकिन हम उसको एरे भी असाइन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। हमने क्या किया, हमने एक एरे पास कर दी, द एरे इज हेयर। एरे क्या हुआ, उसके बाद हमने एक सेट बना लिया। सेट में इसलिए बनाया क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स नहीं आते, ठीक है, वो ये भी भूल गया था कि इसमें डुप्लीकेट्स भी नहीं होने चाहिए, सो दैट्स व्हाई, सॉरी फॉर दिस। देन वी इंपोर्टेड परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन क्या करता है, इट रिटर्न्स permutations of element in the iterable form, 0 1 0 2 1 0 1 2 2 1, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ दिस ये हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। एंड देन हमने चेक किया कि अगर हमारा जो टपल है परम्यूटेशंस के अंदर, क्योंकि ऐसा टपल के तौर पे बिहेव कर रहा है हमारे साथ, ठीक है, if perm 0 0, then we continue to the return sorted list and we can getting that thing, all right. And if this, it should have been not leading 0. After not leading 0 we can add this first, second and third elements, and then we can divide by 2. We can go through this approach. This is another an effective approach, and then we get sorted and we got the answer. So through this we learn how to calculate 3-digit even number. It is an easy problem but it's a little bit tricky to solve it. आप उसे खुद सॉल्व करें, उसके बाद then you can check आपके रिजल्ट्स कैसे जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।